Hello guys, good morning to everybody. So how's you? And after prelims, how is it? Everything is going good? कैसा लग रहा है अभी? प्रीलिम हो गई, ठीक है। अभी मेंस की प्रिपरेशन करनी है। जिन्होंने 20 का अटेम्प्ट दिया, जिन्होंने 20 का अटेम्प्ट नहीं दिया है, उनको प्रीलिम की प्रिपरेशन करनी है, मेंस की दोनों की करनी है। तो मुझे आप लाइव चैट में आप जो भी फील कर रहे हो ना आफ्टर दिस प्रीलिम्स, प्लीज शेयर इट। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इन द लाइव चैट। ओके गाइज, yes, I am waiting for the message. Let's start our session. Just give me a minute. Okay, fine. I hope I am audible and visible to everybody. Very good morning to everyone. Am I audible and visible, guys? Am I audible and visible? क्योंकि मेरे मोबाइल पे तो ऑडिबिलिटी नहीं दिख रही है। मैं मेरा खुद का लेक्चर देखता हूँ ना। So it seems yes, I am audible. Yes, now I am audible. Okay, fine. Let's start. Let's crack UPSC CSE with India's largest learning platform, that is Unacademy. On Unacademy, this is about me, guys. You already know about me. On Unacademy, you will get daily live classes. These classes are very crucial for your pre as well as mains preparation. And on Unacademy's Plus or iconic platform, you will get structured courses, and these structured courses are very, very important if you want to study in a planned way or planned manner. Okay, then on Unacademy we conduct live test and quiz, and again this live test and quiz is very important for pre only. उसके बाद everything that is happening on Unacademy is in recorded format. So what you will get unlimited access to everything that is happening on Unacademy. These are India's top educators who will help you to crack UPSC CSE examination. These are the subjects. Okay, and in case of iconic subscription, आप जब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का, तो आपको क्या होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलता है, दैट यू विल गेट एक्सेस टू अ पर्सनल मेंटोर, एंड दिस पर्सनल मेंटोर इंश्योर्स दैट यू आर स्टडीइंग रेगुलरली डेली, लाइक ये आपके अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे, ठीक है। So 12-month iconic subscription, by using SKUS code, 10% discount, you will pay 57,600. 24-month iconic subscription, SKUS code will give you 10% discount and you will be paying 89,100. And in case of 12-month subscription, instead of paying 44, you will be paying 39,600 because SKUS code will give you 10% discount. And in case of 24-month, SKUS code will give you 10% discount and you will be paying 57,600. We completed our current affairs till 12th September. आई एम प्लानिंग कि हम ये सितंबर मंथ के पूरे करंट अफेयर जल्दी खत्म कर दें, और कल से हम क्या करेंगे, कल से स्पेसिफिकली वैशाली राठौड़ इज सेइंग देयर इज अ वॉइस प्रॉब्लम. इज देयर अ वॉइस प्रॉब्लम, गाइस? प्लीज लेट मी नो सो आई कैन गो अहेड. यस गाइस, प्लीज क्विकली बता दीजिए. आई एम ऑडिबल ना? Audible and visible both clearly? Okay, fine. So what we are going to do is, I am planning to conduct these current affairs of September month on Unacademy at 8 a.m. Okay, fine. Yeah, okay. Welcome खुशबू सिन्हा, वेलकम टू द सेशन. एंड जो भी अक्टूबर के करंट अफेयर ना, वो हम कल से, मतलब 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर की, ये 3 दिन के करंट अफेयर हम 7 मतलब कल 7 अक्टूबर ऑनवर्ड हम कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम सितंबर के भी मिस नहीं करेंगे और अक्टूबर का कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। चलिए, सो दीज आर 12 सितंबर. नाउ गाइज, एज यू ऑलरेडी नो दैट if a person's immunity is strong, then COVID-19 or SARS-CoV-2 virus will not infect that person. Okay, he will not infect that person. No sir. Okay, I can do that. मैंने माइक्रोफोन बंद कर देता हूँ.
अब आवाज आपको शायद क्लियर आएगी, क्योंकि मेरे मोबाइल को मैंने क्या किया था, ब्लूटूथ से ना ये कनेक्ट किया हुआ था मेरा बोट रॉकर्स। अभी मैंने वो डिस्कनेक्ट कर लिया है, तो आई होप कि अभी आपको आवाज क्लियर आ जाएगा, ठीक है। और मुझे 1 मिनट बस टाइम दीजिए। Sorry guys, I'm extremely sorry. Like when you are working from a rented place, you need to face such issues and I hope you understand. So हम बात कर रहे थे कि जो जस्ट अ मिनट, जो SARS-CoV-2 या आपका कोविड-19 डिसीज है, सिंस दिस डिसीज इन न्यूज वी नो कि इम्यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट, बिकॉज जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है दीज पीपल डू नॉट गेट इन्फेक्टेड, और अगर वो इन्फेक्टेड हो भी जाते हैं तो दे कैन मैनेज थिंग्स। पीपल हुज एज इज ओल्डर, या फिर जिन लोगों में अदर डिसीजेस है, तो ये जो अदर डिसीजेस है, इन डिसीजेस में अगर उनको SARS-CoV-2 का इन्फेक्शन हो जाता है तो इन दैट केस देयर इज अ प्रॉब्लम। सो एज वी नो कि spices, there are different types of spices. These spices, they act as immunity booster, and this conception or this information has led to the increase in the export of spice from India. Spice export from India has increased, okay, it has increased. So अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ से आपको सिर्फ ये वाली जो स्लाइड है, इस स्लाइड में बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि स्पाइस जो है ना, दे कैन बी यूज्ड एज इम्यूनिटी बूस्टर्स। स्पाइसेस कैन बी यूज्ड एज इम्यूनिटी बूस्टर्स। क्लियर, ये वाला पहला पॉइंट आपको याद रखना है इन केस ऑफ स्पाइसेस। द सेकेंड पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस सेक्शन इज examples of spices. Number 1 ginger, second turmeric, third coriander, and fourth cumin. These are some names of the spices. Everybody knows these spices because we, particularly Indian, we use these spices regularly in our food. हमारे किचन में, आपको किचन में ये सब मिल जाएगी. So these spices play a very important or vital role in ensuring immunity or better immunity. Fine, this is one point. Second guys, you need to remember the difference between a spice and a difference between a herb. इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए. सो नॉर्मली स्पाइस इज आइदर अ सीड और अ फ्रूट और अ रूट और अ bark or other plant substance which is mainly used for flavoring or coloring. देखिए यहाँ पे एक एक कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ. हम स्पाइस किसे कहेंगे? द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग, or the part of the plant that is used for coloring, that will be called as spice. The second thing that you need to remember about the spice is, normally if we are using seed, that is a spice. If we are using fruit of the fruit of that plant, that is a spice. If we are using root of the plant, that is a spice. If you are using bark, that is a spice. So these are the, if we are using only these parts of the plant for flavoring और कलरिंग, तभी हम उसे क्या कहेंगे? स्पाइस कहेंगे, अदरवाइज नहीं. देयर इज सम अनदर थिंग दैट इज नोन एज हर्ब. सो हर्ब एंड स्पाइस, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. इन केस ऑफ हर्ब्स वी नॉर्मली यूज लीव्स, वी नॉर्मली यूज फ्लावर्स, एंड दे आर मेनली यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग. देखिए, हर्ब्स आर नॉट यूज्ड फॉर कलरिंग. Herbs are not used for coloring. ये याद रहेगा, याद रहेगा सभी को ये वाला पॉइंट गाइस.
ठीक है. Herb are mainly used for coloring and the spices are used for coloring as well as flavoring. We are going to the next slide. This is the difference between a herb and a spice. Fine. Now these spices are used for medicinal purpose. अभी जो मैंने आपको example दिया, that is an example of use of spices for medicinal purposes. Then they are used in religious rituals. Everybody knows कि जो हमारी turmeric है, which is again a part of the spice only. This turmeric is regularly used in Hindu religious rituals. So it is used in the religious rituals. It is used in cosmetic. देखिए शादी से पहले हल्दी लगाने का प्रोग्राम होता है, that is because की स्किन थोड़ी बेटर लगे, so cosmetic में यूज होता है. It is also used as a perfume. So basically spices we can use them in food, we can use them in as a medicine, we can use them in religious ritual, in cosmetic or in perfume production. So these are this is all from this slide. इस स्लाइड से आपको जो याद रखना था वो ये, the difference between a spice and herb, and the difference is spice is used for coloring and flavoring and herb is used only for the sake of flavoring. We are going to the next slide. Now these articles जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं करने वाले, this is from 13 September. So देखिए guys, the bad people, it doesn't matter कि what time is going, या फिर those people who are addicted, उनके लिए COVID-19 जैसा जो पैंडेमिक है ना, even that pandemic didn't stop them from going ahead with drug abuse. हुआ ये था कि because of the COVID-19 pandemic and because of the lockdown, जो भी अल्कोहल शॉप्स है वो सब बंद थी, तो these people started using marijuana, which can be grown in the home or even it is available openly. तो सेल नहीं होता ना ये, तो चुपके से it was available. So instead of alcohol people started consuming marijuana. This was the news. Now from this news we will discuss about the different drugs, types of drugs which are abused, and after that I will explain you what exactly is given or mentioned in the NCERT about the drugs. Clear? चलिए one by one. The first thing, you need to know the definition of narcotics. The reason is NCB, the reason is Kangana, reason is Riya, reason is Bollywood, reason is Arnab, reason is everything that is being discussed regarding drug abuse in the Bollywood. So if drug abuse is in the Bollywood, so you should know each and every basic concept related to the terms that are being used in the newspaper, that are being used in the current affairs. So pehla point, the first thing that you need to remember is narcotics. ठीक है? What is the meaning of narcotics? So the meaning of narcotics is, it is a substance which is used to treat moderate or severe pain. So basically when we use just a minute guys, just a minute. Yes, so any substance that is used to treat moderate or severe pain, that will be called narcotics. That will be called narcotics. किसे कहोगे आप narcotics? Any substance that is used to treat pain, any substance that is used to treat the पेन, दैट विल बी कॉल्ड नार्कोटिक. दूसरा पॉइंट याद रखिए, नार्कोटिक किसे कहते हैं. ठीक है, एनसीबी है ना न्यूज में, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राइट. सो सेकंड थिंग, नार्कोटिक्स, दीज आर द opioids such as morphine and codeine but are not made from opium. So basically
ये अलग अलग डेफिनेशंस है नार्कोटिक्स की। नॉर्मली ओपियोइड जो भी अलग अलग टाइप के ड्रग्स है उसमें कोको कैनाबिनॉइड्स आते हैं, ओपियोइड्स आते हैं, वो सब आते हैं। तो जितने भी ओपियोइड्स है ना उनके लिए हम कॉमन टर्म यूज करते हैं नार्कोटिक्स। सो इंक्लूसिव जो टर्म है ना नार्कोटिक्स के लिए, द इंक्लूसिव टर्म और डेफिनेशन ऑफ नार्कोटिक्स इज any substance that is used to treat moderate or severe pain is a narcotic, and that substance should be can be abused, या वो सब्सटेंस अगर यूज करना स्टार्ट करे तो हमें उसकी आदत लग सकती है। यू कैन बिकम हैबिचुअल ऑफ दैट सब्सटेंस। ऐसे ही सब्सटेंस को आप क्या कहोगे? नार्कोटिक्स। याद रहेगा? सभी को याद रहेगा? क्विकली बता दीजिए मुझे लाइव चैट में। सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि नाउ अ डेज we mostly use the term narcotics for the opioid drugs which is not compulsory. This is the perfect definition of narcotics. तो अब तक हमने देखा, अभी स्लाइड से आपको सिर्फ कंसेप्ट ऑफ नार्कोटिक्स अंडरस्टैंड करनी थी। व्हाट एग्जैक्टली नार्कोटिक्स इज, दैट्स इट। फाइन, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर अगेन इन्होंने डेफिनेशन दी है नार्कोटिक्स की। नार्कोटिक इज अ सब्सटेंस और ड्रग, narcotic is a substance or drug that produces analgesia, means which can be used as a pain relief, plus it should be able to produce narcosis. It should be able to produce narcosis. Now what is the meaning of narcosis? It is a state of stupor or sleep, मतलब आपको स्लीपी फील होना चाहिए ड्रग लेने के बाद। इवन देयर आर मेनी मेडिकेशंस, व्हेन यू टेक दीज मेडिकेशंस यू विल फील स्लीपी। Fine. So first criteria, it should be an analgesic, means which can be used against pain. Second criteria, it should be used, it should lead to sleep, जिसे हमने कहा narcosis. Third point, it should lead to addiction, as I already told you कि it should lead to the habitual, मतलब आपको इसकी habit लगने की possibility होनी चाहिए, addiction. Fine. So these are the three keywords. If any substance fulfill these three conditions, तो हम उसे क्या कहेंगे? नार्कोटिक। द फर्स्ट कंडीशन, इट शुड बी एनाल्जेसिक, सेकेंड कंडीशन, इट शुड बी अ नार्कोसिस, एंड थर्ड कंडीशन, इट शुड लीड टू एडिक्शन। दैट्स इट। इन सम केसेस narcotics also produce a feeling of great elation और यूफोरिया। ये ऑप्शनल है, मतलब मैंने अगर नार्कोटिक्स लिए तो मुझ में यूफोरिया आएगा ही ऐसा नहीं है, बट लेकिन ये एनाल्जेसिक, इट शुड एक्ट एज एनाल्जेसिक, इट शुड लीड टू द एडिक्शन और इट शुड लीड टू द नार्कोसिस। क्लियर हो गया वाला पॉइंट? वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सी, बिकॉज the main characteristic of a narcotic is a pain relief, so these narcotics are used in medical field as pain relieving agents or as drugs which are analgesic, which are used to treat the pain. So the main therapeutic use of narcotics is for pain relief, so they are used in medicine. सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, मोस्ट ऑफ द नार्कोटिक्स है ना, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द ओपियम प्लांट, जिसे कहते हैं पैपेवर सोमनिफरम। इसी को पॉपी प्लांट कहा जाता है, इसी को पैपेवर सोमनिफेरम कहा जाता है। सो दिस पैपेवर सोमनिफेरम से हम ये नार्कोटिक्स या ओपियोइड्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड दीज ओपियोइड्स आर यूज्ड टू ट्रीट पेन, or they are abused for euphoria, they are abused for addiction, they are abused for stupor, they are abused for sleep. इन सब के लिए भी उनका अब्यूज किया जाता है। सो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, can we produce narcotics for the sake of मेडिकल यूज? क्या हम नार्कोटिक्स को मेडिकल यूज के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं? फार्मर्स नार्कोटिक्स या पेपर सोमनिफेरम या पॉपी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं ताकि उन्हें हम मेडिसिन में या हॉस्पिटल में यूज कर सके? बताइए जल्दी से।
किया जा सकता है ये गाइस? जल्दी बताइए। तो यस गाइस, with the permission of government we can grow poppy plant. In case of India, in 3 states we grow poppy plant with government permission. These are UP, MP and राजस्थान। इन 3 स्टेट्स में हम ये कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट, यस अंजू देवी ने सही कहा, लाइसेंस चाहिए। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इस स्लाइड से आपको पता चल गया कि नार्कोटिक्स कैन बी प्रोड्यूस्ड लीगली विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट सो दैट दे कैन बी यूज्ड एज अ मेडिसिन। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये रही आपकी नेक्स्ट स्लाइड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नार्कोटिक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपियोइड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपियोइड इज मॉर्फिन। गाइस, आपने अगर कोई भी वॉर मूवी देखा होगा, आपने अगर कोई भी वॉर मूवी देखा होगा पर्टिकुलरली हॉलीवुड का, एंड इफ इन दैट वॉर मूवी देयर आर सोल्जर्स, तो ये सोल्जर्स की जो किट होती है ना, इस किट में कंपलसरी मॉर्फिन होता है। इस किट में कंपलसरी क्या होता है? मॉर्फिन होता है। क्यों? क्योंकि सोल्जर्स को अगर ड्यूरिंग वॉर टाइम इफ ही इज इंजर्ड एंड ही इज इन एक्सट्रीम पेन, तो एटलीस्ट वो सोल्जर अपना पेन रिलीफ कर सकता है खुद से बाय इंजेक्टिंग मॉर्फिन। Okay, so morphine is a chemical derived from the poppy plant which can be used as a pain reliever, as well as morphine can be abused as a drug. Morphine can be abused as a drug. ठीक है, क्लियर? सो यहां से एक पहला पॉइंट आपको याद रखना है, द नेम मॉर्फिन यू नीड टू रिमेंबर। देन आपको ये भी याद रखना है, दिस मॉर्फिन इज अ ओपियोइड। व्हाट इज मॉर्फिन? मॉर्फिन इज अ ओपियोइड। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉपी प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पॉपी प्लांट? इट इज पैपेवर somniferum. This is the scientific name of morphine, and this morphine is used as a medicine as well as it can be abused as a drug. That's it. इस स्लाइड से आपको इतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ, खुशबू सिन्हा, आई विल कम टू द ओपियोइड, डोंट वरी। हम कैनाबिनॉइड, ओपियोइड और कोकाल्कोलॉइड, ये 3 टाइप की ड्रग्स डिस्कस करने वाले, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आई विल कम बैक, जस्ट गिव मी सम टाइम, आगे आने वाला है। मॉर्फिन सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? क्लियर? सो दिस मॉर्फिन कैन बी प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली from opioids. The term opiate, opioid and narcotics, they are used interchangeably, but याद रखिए, this narcotic term can be used for any substance which can be used for pain relief, which has qualities of being addiction, और जो एक यूफोरिया की फीलिंग देता है, उन सब के लिए आप नार्कोटिक ये टर्म यूज कर सकते हो। बट नॉर्मली ये सब ओपीएम यूज किया जाता है, इसलिए हमने इसे क्या कहा? नार्कोटिक्स। दिस इज like opioids, opiate and narcotic, these are interchangeable terms. We are going to the next slide. Okay, यहाँ से आप देख लीजिए, there are these drugs are detrimental, it can lead to the drug abuse. This is the narcotic. ठीक है, नेक्स्ट नार्कोटिक्स में और भी कुछ है, जैसे कोडेन। कोडेन इज, सो सबसे पहले पॉपी प्लांट। Okay, the first thing is poppy plant, because these substances are extracted from poppy plant or opium plant. इसी का नाम क्या है? opium plant, और इसी को हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं? पैपावर somniferum, पैपावर somniferum। तो ये जो तीनों टर्म्स है ना, बिकॉज मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओपियम, तो हमने उनके लिए टर्म यूज की ओपियोइड, खुशबू। प्लस इसी मॉर्फिन से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? कोडेन। आपको प्रीलिम के लिए याद रखना है, वेदर इट इज मॉर्फिन और कोडेन, बोथ आर ओपियोइड्स। याद रहेगा,
Morphine as well as codeine are opioids, and all the opioids, they are extracted from the poppy plant, they are extracted from the opium plant, they are extracted from the papaver somniferum. That's it. We are going to the next slide now. अनदर, ये तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा, हेरोइन. हेरोइन, अनदर नेम ऑफ हेरोइन इज डायएसिटिल मॉर्फिन. व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ हेरोइन? डायएसिटिल मॉर्फिन. अब इसमें क्या आ गया? मॉर्फिन. सो बेसिकली व्हाट वी डू, this is poppy plant. From poppy plant we extracted morphine, and if you add एसिटिल, मॉर्फिन में अगर आपने एसिटिल ग्रुप ऐड कर दिया, जिसे कहा जाता है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट डायएसिटिल मॉर्फिन. और डायएसिटिल मॉर्फिन को ही हम क्या कह रहे हैं? व्हाट वी आर कॉलिंग डायएसिटिल मॉर्फिन? वी आर कॉलिंग डायएसिटिल मॉर्फिन हेरोइन. क्या कहा हमने डायएसिटिल मॉर्फिन को? हेरोइन. Now guys, you know 3 drugs. All these 3 are, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है. I am writing the names of the drugs. Morphine, codeine, heroin. Please tell me, these 3 drugs are opioids, these 3 drugs are cannabinoids, और these 3 drugs are coca alkaloids. इन तीनों में से ये कौन है? मॉर्फिन, कोडेन, हेरोइन जो है, दे आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका अल्कलॉइड्स. क्या है? ये आपका क्वेश्चन है. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. देन आई विल गो अहेड. क्विकली चलिए जल्दी से बताइए. आई वेरी गुड. खुशबू, sorry, Ramandeep Kaur and Rudrani Singh, very good. These are all opioids. ठीक है. चलिए आगे. यहाँ आप देख लीजिए बाकी एग्जाम्पल जो कि सिंथेटिक है. बाकी एग्जाम्पल उनके नाम याद रखिए. दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट. यस, these 3 names are very important. This meperidine, not much important. Methadone, not much important. Livorphenol, not much important. These will become important only if they are in current affair or they are in news. तभी ये important हो सकते हैं. चलिए, we are going to the next slide. So this is how, this is heroin. हेरोइन की ऐसे टैबलेट आती है, हेरोइन ऐसे पाउडर फॉर्मेट भी होता है, या हेरोइन ऐसे लिक्विड में भी मिलेगा, विच इज इंजेक्टेड और स्नॉर्टेड. ठीक है. वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ व्हाट इज मैरिजुआना? बिकॉज न्यूज वाज अबाउट मैरिजुआना. आप अगर फर्स्ट स्लाइड देखोगे, just check out the first slide. The demand for drugs peaked with liquor shops shut. The prolonged lockdown saw higher marijuana consumption due to its relatively easier availability. Now what is marijuana? अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ marijuana किसे कहते हैं. Okay. The another term that is used for marijuana is weed, which is very common in young generation. Another term used for marijuana is herb. Marijuana is also known as pot. It is also known as grass. It is also known as bud. It is also known as ganja. It is also known as marijuana. And there are many other terms that are used for marijuana. Guys, if you are planning to become IPS officer, you should be aware of all these names that are used for marijuana, because you need to deal with the drug abuse in youngsters as a IPS officer. और आपको रेव पार्टीज को भी क्या करना है? रेड करना है. मैं होप करता हूँ कि आप में से कोई रेव पार्टी में नहीं जाता. ठीक है. सो अब हम आते हैं मैरिजुआना पे. तो पहला टर्म मैरिजुआना के कॉमन नाम पता चल गया आपको. नाउ सी, दिस मैरिजुआना इज मैन्युफैक्चर्ड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैनबिस सटाइवा. So देखिए, because marijuana is extracted from the dried flowers of cannabis sativa. It is extracted from the dried flowers of cannabis sativa,
तो हम इसे क्या कहते हैं मैरिजुआना को? वी कॉल मैरिजुआना कैनाबिनॉइड्स। क्या कहा हमने इसे? कैनाबिनॉइड्स। अभी आपको ओपियोइड तो पता चल गए, आपको ओपियोइड तो पता चल गए, अब आपको पहला कैनाबिनॉइड पता चल गया, मैरिजुआना। And this marijuana is produced from the dried flowers of cannabis sativa. अब आप मुझे बताओगे, please tell me the names of the opioids that you know. Yes, that is really true, Rudrani. Guys, Rudrani is saying that, sir, UPSC is sufficient to make us high. Yes, एक्चुअली मैं भी हाई हो जाता हूँ, यूफोरिया में चला जाता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ या आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। प्लीज टेल मी द नेम्स ऑफ ओपियोइड्स दैट यू नो। अभी तक आपको जो भी ओपियोइड्स पता है ना, उनके नाम आप यहाँ बताओगे, और आप मुझे ये भी बताओगे कि आपको जो कैनाबिनॉइड्स पता है वो कौन से हैं। चलिए क्विकली कमेंट बॉक्स में मुझे नाम चाहिए, नेम्स ऑफ द ओपियोइड्स एंड नेम्स ऑफ द कैनाबिनॉइड्स, क्विकली। वेरी गुड रमनदीप, मॉर्फिन, हेरोइन एंड कोडेन, दीज आर द 3 ओपियोइड्स दैट आर नोन टू यू। इससे भी ज्यादा है, लेकिन ये 3 आपको पता है। व्हाट अबाउट द कैनाबिनॉइड्स? कैनाबिनॉइड्स के नाम बताइए क्विकली, चलिए। यस यस, आपने ओपियोइड्स के सभी ने बता दिए, अब कैनाबिनॉइड्स के नाम बता दीजिए जल्दी से। एक ही तो आपको पता है ना, द नेम ऑफ दैट कैनाबिनॉइड इज मैरिजुआना, है ना? मैरिजुआना इज अ कैनाबिनॉइड, फाइन। नेक्स्ट आइए आप, अब ये जो मैरिजुआना है, इफ यू आर स्मोकिंग दिस मैरिजुआना इन हैंड रोल्ड सिगरेट्स, तो आप उसे कहते हो जॉइंट। इफ यू आर स्मोकिंग मैरिजुआना इन पाइप्स और वाटर पाइप्स, उन्हें कहा जाता है बॉन्ग्स या ब्लंट्स। मतलब जॉइंट का मतलब क्या है? व्हेन यू आर स्मोकिंग मैरिजुआना इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट्स, एंड ब्लंट या फिर बॉन्ग, ये टर्म कब यूज होती है? व्हेन यू आर स्मोकिंग मैरिजुआना थ्रू पाइप्स या फिर आपके सिगार से। आपने वो देखा है ना, कौन सा मूवी? यस, वी विल कम टू दैट अंजू देवी, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हमने वो नाना पाटेकर और राजकुमार का एक मूवी था ना, तिरंगा। तिरंगा में वो सिगार ही तो स्मोक करता है ना राजकुमार, ना तलवार की धार से, ना चाकू की, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। यही डायलॉग है ना, बहुत फेमस डायलॉग राजकुमार का। तो उसमें वो सिगार ही स्मोक कर रहा है। अगर उस सिगार में मैरिजुआना होगा तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे आप उसे? यू विल कॉल इट अ बॉन्ग और ब्लंट। यू विल कॉल इट ब्लंट और बॉन्ग। और अगर कोई सिगरेट में मैरिजुआना पी रहा है तो आप क्या कहोगे उसे? जॉइंट। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो आई होप यू नो द terms like weed, herb, pot, grass, bird, ganja, Mary Jane. This is all from the cannabis sativa, and joints, bongs and blunts. We are going to the next slide. This is cannabis sativa. हम हमारे इंडिया में या पर्टिकुलरली हमारे महाराष्ट्र में हम इसे कहते हैं गांजा। इसे हम कहते हैं गांजा। ये प्लांट आपको बहुत सारे फार्मर के खेतों में मिलेगा, एक या दो लगाए हुए रहते हैं, and then these farmers they will smoke that in their home। ठीक है, चलिए आगे। दिस इज गांजा, कैनबिस सटाइवा, जिससे हमने मैरिजुआना एक्सट्रैक्ट करना है। यू कैन सी द प्लांट्स। अब आते हैं मैरिजुआना पे। सी दिस मैरिजुआना इज ऑल्सो यूज टू ब्रू टी, मतलब यू कैन ड्रिंक टी दैट इज produced from marijuana. Then it is also sold or consumed for medicinal purpose. Then it is also used in food edibles such as brownies, cookies and candies. मतलब आप marijuana से टी बना सकते हो, marijuana से मेडिसिन बना सकते हो। ओके, इट इज इलीगल रमनदीप, मैरिजुआना ग्रो करना इलीगल है। देन आप मैरिजुआना से ब्राउनीज बना सकते हो, मैरिजुआना ब्राउनीज। We make the best marijuana brownies, okay? Then you can make marijuana cookies,
और फिर एडवर्टाइज करो फेसबुक इंस्टाग्राम पे, मत करो, नहीं तो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी कि ये बोल रहा है बंदा मैरिजुआना के कुकीज सेल करो, ब्राउनीज सेल करो, कैंडीज सेल करो। सो इस फॉर्म में मैरिजुआना सेल होता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम मैरिजुआना। इवन दिस मैरिजुआना कैन बी कंज्यूम्ड थ्रू वेपराइजर्स। कितने सारे ऑप्शन लोगों ने बना रखे। मैरिजुआना आप सिगारेट में स्मोक कर सकते हो, सिगार में स्मोक कर सकते हो, ब्राउनीज के थ्रू ईट कर सकते हो, कुकीज के थ्रू ईट कर सकते हो, कैंडीज के थ्रू ईट कर सकते हो, टीज के थ्रू ड्रिंक कर सकते हो, या फिर कुछ भी नहीं मिला तो वेपराइजर से आप इसे क्या कर सकते हो, स्मोक कर सकते हो। कितने ऑप्शन, गंदी चीजों या गलत चीजों के कितने सारे ऑप्शन हम बना लेते हैं, राइट। सो अब ये जो मैरिजुआना होता है, जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मैरिजुआना है ना, इट इंक्लूड्स सिनसेमिला, वन बाय वन, सिनसेमिला, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मैरिजुआना। क्या है ये? दिस इज द स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मैरिजुआना। ओके, ये पहला पॉइंट याद रखिए। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है सिनसेमिला से, दिस सिनसेमिला इट इज एन एग्जांपल ऑफ मैरिजुआना ओनली, बट इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टेंडेड फीमेल प्लांट। सिनसेमिला आप किससे बनाते हो? फीमेल प्लांट से बनाते हो। ओके, क्लियर, समझ में आया? उसके बाद श्री पार्थसारथी, आई एम योर फ्रेंड। पार्थसारथी, आई एम योर फ्रेंड। क्लियर। सो सिनसेमिला, इसी को कहा जाता है हश ऑयल, इसी को कहा जाता है वैक्सी बटर, इसी को कहा जाता है हार्ड एम्बर लाइक शटर। सो दीज आर द सेम टर्म्स फॉर द मैरिजुआना ओनली, बट विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फीमेल प्लांट्स। क्लियर। सो दिस इज अबाउट द मैरिजुआना। मैरिजुआना का केमिकल नाम है डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। Cannabinol, this is the main chemical compound which act as a or which has intoxicating effects, इस जिसके intoxicating effects होते हैं, ठीक है। देन अब इस कैनबिस प्लांट में ये तो मेन केमिकल है जो मेन रोल प्ले करता है मैरिजुआना में, लेकिन देयर आर मोर देन 500 केमिकल्स, जिन सबको मिलकर हम टर्म क्या यूज करते हैं? कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। तो गाइज अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताता हूँ। इतनी ही चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो यू आर गुड फ्रॉम टुडेज सेशन, ठीक है। नंबर वन, इफ यू नो व्हाट इज मॉर्फिन, यू आर गुड। सेकेंड, इफ यू नो व्हाट इज हेरोइन, यू आर गुड। इफ यू नो व्हाट इज कोडेन, you are good. If you know what is opium, और आगे भी आने वाला है, you are good. And if you know what is marijuana, you are good. आज के लिए इतना ही इनफ है, ठीक है। रेस्ट जो है we will discuss this tomorrow। अच्छा, अब कुछ बातें समझिए आप, मैं आपको वैसे अपडेट